Now, I begin this idea with the question every time, and the question here is, I've mentioned certain laws here. Representation of People Act 50, Representation of People Act 51, Indian Citizenship Act 55, and Manrega. Please answer my question. Which of the following laws or law is not mentioned in the Constitution of India? Which of the following laws or law is not mentioned in the Constitution of India? इनमें से कौन सा कानून ऐसा है जो संविधान में मेंशन नहीं है? मनरेगा, 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 सब मनरेगा बोल रहे हैं. सर, none of them is mentioned in the Constitution of India. Let me tell you, none of them is mentioned in the Constitution of India. पहली बात, none of them is mentioned in the Constitution of India. Question number 2, right to equality, right against untouchability, right to life. Which of them is in the Constitution of India? Answer is all. Right to life, right against untouchability, right to equality, all are mentioned in the Constitution of India. ये बात भी clear है? Now next question. See, again I'm focusing on the same thing. When I ask you a question, my point is not to ask a question. My point is to deliver a concept. So take the question not as a quiz, but as understanding. Now, these laws, none of them is in the Constitution of India. They are outside the Constitution of India. These are within the Constitution of India. Now, my next question is that the laws outside the Constitution and inside the Constitution, which of them is called law? The provision outside the Constitution, the provision inside the Constitution, which of them is law? दोनों law है. These are laws. These are also laws. Because law is something which is legally binding. Law is something which is legally binding. You have to follow this, Gabriel. You have to follow this, Ardhindu. You have to follow this. You have to follow that. Both are legally binding. You don't follow this, punishment. You don't follow this, punishment. So they are legally binding on you. You have to follow them. Law, law. But because this is in the book itself, the Constitution itself, we give it special weightage and we call it as constitutional law. Constitutional laws, because they are in the Constitution. एक मैं बहुत छोटा सा, बहुत लाइटर सेंस में एक एग्जांपल देता हूं. वो हर जगह देता हूं तो आपको भी बताता हूं. अब इंसान है ना, हम क्लास से इतने क्लास डिवाइडेड हैं कि कभी कभी हम खुद भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं. Class division is so much ingrained here. I give an example. For example, let's say you have a dog and which is going in the car. मैं क्लास में समझाता हूं ये बात, ये क्लास ही है कि एक बड़ी सी गाड़ी में कैनाइन इज गोइंग, हाई एंड जैगुआर है, रेंज रोवर है, तो उसमें कैनाइन मुंह बाहर निकाल के जा रहा है, तो उसे क्या बोलोगे? उसे कुत्ता बोलोगे? बिल्कुल नहीं. यू विल नॉट फील इट राइट कॉलिंग एम डॉग. कैनाइन बोलोगे, पेडिग्री कैनाइन, हाईब्रिड कैनाइन. उसे कुत्ता तो मतलब ही नहीं है, उसे हम डॉग भी बोले, हमें शर्म आती है इस बात पे भी. हाँ, शेर बोल सकते हैं. तो इतनी बड़ी गाड़ी में जो बैठ के जा रहा है, कभी उसे हम कुत्ता बोलते हैं? नहीं बोलते. उसका नाम भी क्या होता है? उसके नाम भी बड़े हाई एंड होते हैं. पेवलोव, एंडल, स्विट्जर, दैट इज द नेम गिवन टू देम. एंड देन यू हैव अ डॉग ऑन द स्ट्रीट. डॉग ऑन द स्ट्रीट, यू कॉल देम कालू. जो बेचारा सड़क पे है उसे आप बोलते हो कालू. बहुत इज्जत देनी तो उसे शेरू बोल दिया. कालू एंड शेरू, पेवलोव एंड एंडल. ऑफ द टू, which is a dog? Both are dog. Of the two, which is a kutta? Both are kutta. But still you have a difference of class. One inside the car. You don't simply call them a dog or kutta. आप उन्हें स्पेशल वेटेज देते हो, नाम भी अलग होते हैं. स्विट्जर लिख के दिखा दो आज. स्विट्जर की स्पेलिंग क्या होती है? मुझे बोलना नहीं आता, लिखना तो बहुत दूर की बात है. बट यू स्टिल गिव देम स्पेशल वेटेज, क्योंकि वो कार के अंदर है. हवा खाते हुए जाते हैं, जीभ बाहर निकालते हुए. हमें गर्मी लग रही है, वो एसी की हवा में खिड़की खोल के ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि सर वो कार के अंदर है. और जो बेचारा सड़क पे घूम रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है. मगर है तो दोनों एक ही स्पीशीज, कुत्ते ही तो हैं दोनों. अंदर बाहर से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सर, जो अंदर है उसकी वैल्यू ज्यादा है. यही बात यहां पर अप्लाई होती है. लॉ, लॉ, लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग. बट बिकॉज दिस इज इन द बुक इटसेल्फ, you call them as constitutional law.
लॉ तो ये भी है मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी लॉ। यू कॉल इट ऑर्डिनरी लॉ। ये है कालू, ऑर्डिनरी लॉ, और यू कॉल देम एज व्हाट, स्टैट्यूट्स, एंड दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ये बात भी क्लियर हो गई? ऑफ द टू, constitutional law and ordinary law, answer my question. Of the two, constitutional law and ordinary law, which is governing the country, which is running the country? Answer my question. Constitutional law or ordinary law, देश को कौन चला रहा है? Both. Both is the right answer. Very good. Excellent, all of you. रोहित, रक्षित, अर्धेंदु, नेहा, नीता, बहुत बढ़िया. Both are running the country. But these laws are secondary law and they are made according to constitutional law. ये जो ordinary law है ये secondary law कहलाते हैं क्योंकि ये जो कानून है ये इसके हिसाब से बनाए गए हैं. These laws are made according to these laws, या इनको डिटेल देने के लिए लॉ बनाए गए हैं. Ordinary laws are made according to the constitutional laws, but both are governing the country. I hope the point has been delivered very well. ठीक है? Wherever you have a written constitution, you have such arrangements. Now let's say this is India and you come to this country from abroad and you go to the bookstore and you say I want the constitution of India. आप बाहर से आए हो, आप इंडिया में आते हो, आप कहते हो मुझे भारत का संविधान चाहिए. बुक स्टोर वाले का बोलेगा, क्या बोलेगा? बोलेगा मुझे पैसे चाहिए. You come to India, you ask for constitution of India. He will ask for money. You give him money, he give you the book. Now this is constitution of India, the book here. But India is not only governed by this. India is also governed by these laws. These laws are passed by Parliament. RPA 50, RPA 51, Citizenship Act, Manrega, Motor Vehicle Act. So they also govern the country. This also governs the country. And together, this is governing the country. I hope the point is clear. These are the laws passed by the Parliament. This is the constitution made by the Constituent Assembly. ये असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ये पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं. ये जो लॉ है इसके हिसाब से बनाए गए हैं और ये दोनों देश को चला रहे हैं. ठीक है? दिस इज व्हाट यू फाइंड इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. मगर व्हेन यू गो टू द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन यू गो टू द कंट्री वेयर यू हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर every law is ordinary law. You don't have this. Now let's say you go to Britain. Now here in Britain, you have got legislature. Legislature मतलब क्या? Parliament. ठीक है? Now you have got executive and you got judiciary. Okay. Now these are the three primary wings of the state: legislature, executive, judiciary. Now wherever you have unwritten constitution, be it UK, Israel, New Zealand, wherever you have them, let's say you go to UK and you want constitution of UK, they cannot give you a book. They cannot give you the book because there is no such book. In UK, what all they have to govern the country are the discrete laws passed by the Parliament. Now, this may be the law passed by the British Parliament in 14th century, still working. This may be the law passed by the British Parliament in 19th century, still working. This is the law passed by the British Parliament in 20th century, still working. Law passed in 2010, 2022, 2024, and this collection of laws is what they call as their constitution. वहां पे कोई एक किताब नहीं मिलेगी आपको जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन बोलो. वहां पर पार्लियामेंट ने जो लॉ पास करे अलग अलग टाइम पे, लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 3, law number 4, and this goes to law number n. So there, the collection of these laws, simply ordinary laws, they are all ordinary. ये सारे कालू है, कालू. There is no Pavlov there, only कालू. Collection of kalus is what you call as unwritten constitution. These are the laws passed by the parliament over a period of time, and they are not compiled in a single book. And this वर्चुअल कलेक्शन, वर्चुअल इसलिए क्योंकि एक किताब में तो है नहीं ना, ये डिस्क्रीट लॉज हैं जो पार्लियामेंट ने अलग अलग टाइम पे पास किए थे. मान लो अगर ये किताब में होते तो यही है उनका
unwritten constitution. It's a collection of ordinary laws passed by the parliament across the period, and this is unwritten constitution. ठीक है.